Yes, hi all the students. Welcome once again to ACAT. My name is Anil Chaudhary, and today we are going to have a fantastic live streaming where we are going to discuss about VARC. So students, for the last 22 years, I have been training the students for CAT, and especially this particular section of CAT, it becomes my forte. So on the basis of the experience which I have got, today students, I'll be talking about what is the importance of critical reasoning in developing a very strong mastery over reading comprehension. I generally see that students, they feel like sir CR के क्वेश्चन वैसे भी कैट में नहीं आते. So anyway, what is the purpose of studying CR? But believe me, students, when we talk about reading comprehension, and if you minutely observe the kind of questions which actually come in RC, a good number of questions are directly or indirectly based on a very good understanding of critical reasoning. So students, today we are going to have a detailed understanding about critical reasoning. We will see what is the importance of this. I'll make you solve a few questions also. And moreover, students, I'll discuss with you some very important tips, tricks, and hacks to develop a very good understanding of critical reasoning. So all the students, welcome once again. और जितने भी students बाद में इस पूरे सेशन को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखेंगे, प्लीज इंश्योर दैट इस पूरे सेशन को वॉच करें एंड उसके बाद अपने कमेंट जरूर दें. And moreover, students, in the coming weeks, we are going to have a good number of live sessions where we will make you understand how to solve the reading comprehension passages. We will make you understand how to develop a strong command and competency over solving the questions of verbal ability also. तो इन सब पर हम लोग डिस्कशन करेंगे. एंड मोreover, students, YouTube पर तो it is only the tip of the iceberg. If you really want to discover what kind of depth the team of ACAT has got, तो इसके लिए students, you will have to enroll with our dedicated batches, which is Mission IIM Possible for Target CAT 2025. And this 13th of June, we are going to start our session for our new batches for CAT 2026 also. And जो भी बच्चे स्पेशली CAT 2025 को if you people are targeting, तो दो नए बैचेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. सबसे पहले मैं वो अनाउंसमेंट बता दूं और उसके बाद स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टुडेज सेशन. So the announcement is we are going to start the next batch this day after tomorrow, Monday, June 9th. So June 9th को we are going to start the next batch for CAT 2025. और उसके बाद स्टूडेंट्स 23rd June again you are going to have a new batch for CAT 2025. और इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेट जो बिल्कुल मिस मत करना. आई नो thousands of students are waiting for the dedicated mock test series of ACAT. And students, इस पूरी टेस्ट सीरीज का हमारा नाम है WinCat. So when I talk about WinCat, the very first test we are going to have this 14th of June. So 14th को students हमारा पहला mock test होगा and this is going to be open for everyone. And purely on the basis of this mock test, you people can avail some very good scholarships also. I urge all the students, ये जितने भी इवेंट्स ACAT के हो रहे हैं, एक भी स्टूडेंट्स एक भी इवेंट को मिस मत करना. आने वाले दिनों में स्टूडेंट्स ACAT is going to create a history in the field of online coaching for CAT. In the last 1 year, the kind of response which you people have given that has actually boosted our morale, and we are very confident that ACAT is now the fastest growing online platform for CAT education, for CAT coaching. And just तरह के terrific results CAT 2024, SNAP, ZAT सभी के मिले हैं. इनसे स्टूडेंट्स जबरदस्त, हमारा जोश तो बिल्कुल हाई है. So all the students, if you are serious for CAT 2025 and if you don't want to take any chance, so trust ACAT, none other. And believe me students, अगर कहीं और ज्वाइन भी कर रखा है, but still if you are not very satisfied with any particular section or with the complete course, so we have multiple options for you. अगर स्टूडेंट्स आपको पूरा कोर्स ज्वाइन करना है, you people can at the same time fund VRC, DILR, dedicated individual courses are also there. So we urge all the students either visit the website iconascat.com, otherwise you people can install the ACAT application as well. Okay, चलिए अब स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन क्रिटिकल रीजनिंग को लेकर. तो वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग. नाउ सी स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग, सबसे पहले तो इसके पैटर्न को समझते हैं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन क्रिटिकल रीजनिंग.
स्पेशली जीमैट जैसे पेपर्स में इसका बहुत वेटेज होता है एंड द स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग दैट उसमें भी क्रिटिकल रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और एनमैट में भी। कैट में डायरेक्टली क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कम देखे जाते हैं, बट अगर मैं स्टूडेंट्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो मोर और लेस a lot of questions are based on the concepts of critical reasoning. सबसे पहले तो let us try to understand what actually happens in this and what kind of questions do come in this. Critical reasoning में students generally a small paragraph is given to us and one question is based on that. अब ये जो questions होते हैं ये थोड़े से typical होते हैं, प्योरली इंग्लिश आने से काम नहीं चलेगा, हमें साथ में थोड़ी बहुत लॉजिक और थोड़ी बहुत रीजनिंग भी अप्लाई करना आना चाहिए। एंड स्टूडेंट्स अगर मैं बताऊं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच अ स्टूडेंट में जनरली फेस इन सीआर क्रिटिकल रीजनिंग, तो ये 5 तरह के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन असम्पशन, तो व्हाट मस्ट बी ट्रू फॉर द आर्गुमेंट टू वर्क। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असम्पशन। स्टूडेंट्स देखो, व्हेन आई टॉक अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग, कोई भी क्वेश्चन जब क्रिटिकल रीजनिंग का होता है तो व्हाट इज गिवन इन दिस, a paragraph is given to us, a paragraph is given to us, and then students one question is there and 4 options are there. Agreed? अब स्टूडेंट ये जो पैराग्राफ होता है इसमें there is one premise, there is a conclusion on the basis of that premise. इस पैटर्न को बहुत अच्छी तरह से समझना है एक बार। So what actually happens in critical reasoning? There is one paragraph which is given to us, which is known as the argument. अब उस आर्ग्यूमेंट में स्टूडेंट्स एक तो प्रमाइस होता है। What is a premise? प्रमाइस का मतलब है some facts and figures. प्रमाइस का मतलब है स्टूडेंट्स मेरा कोई पास्ट एक्सपीरियंस। प्रमाइस का मतलब है it can be any research, any study or any information. And on the basis of that, I will draw a conclusion. तो किसी भी आर्ग्यूमेंट में या किसी भी क्रिटिकल रीजनिंग के पैराग्राफ में आप देखोगे स्टूडेंट्स देयर इज सम information given to us, some facts and figures can be there, some past experience can be there, on the basis of which I'm drawing some conclusions. So you people do understand. In case of an argument of critical reasoning, there are 2 important elements, premise and conclusion. हम जिसके बेसिस पर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं उसे स्टूडेंट्स हम लोग प्रमाइस कहते हैं। तो प्रमाइस का मतलब बड़ा सिंपल सा है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच we people are deducing something, we people are drawing a conclusion. So that is actually known as a premise. मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जब स्टूडेंट्स मैं आपको क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको पता है स्टूडेंट्स, बिकॉज मैंने लास्ट ईयर भी देखा है जितने बच्चों को हमने गाइड किया कि नहीं यार तुम्हें क्रिटिकल रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उन सब स्टूडेंट्स का जो कैट का परसेंटाइल है, उन सभी स्टूडेंट्स का जो फीडबैक मुझे मिला, ऑन द बेसिस ऑफ दैट I drew a conclusion. Yes, critical reasoning plays a very important role for CAT, and definitely we should motivate the students for that. Now, you people see, when I decided that, yes, critical reasoning is important and we should motivate the students for that. So this is the conclusion which I was able to draw. And this conclusion is actually based on what? Based on the past experiences of the students, based on the past results of the students. So now you people understand. जो बच्चों का फीडबैक था, जो बच्चों का लास्ट ईयर का रिजल्ट था, that actually becomes a premise. And on the basis of that, we concluded that critical reasoning is important for CAT and we should motivate the students for that. So you people understand, मेरा conclusion किस पर बेस्ड था? बस that becomes the premise. अब सोचो स्टूडेंट्स, जब भी मैं कोई कंक्लूजन ड्रॉ करता हूँ on the basis of some premise, so there is always an assumption. And what is the meaning of an assumption? अजम्पशन स्टूडेंट्स पैराग्राफ में या आर्गुमेंट में कहीं पर ओपनली स्टेटेड नहीं होता है, बट बिना अजम्पशन के कभी कुछ होता नहीं है। अंडरस्टैंड? नाउ यू पीपल सी, लास्ट ईयर क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ाने की वजह से स्टूडेंट्स का स्कोर इंप्रूव हुआ, so I concluded that this year also we should actually teach critical reasoning to the students. आप सोचो स्टूडेंट, ये जो कंक्लूजन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसके पीछे there is some unstated assumption. What is that? So here students I assume that इस साल भी कैट का पैटर्न वही रहेगा जो लास्ट ईयर था। तो कहीं ना कहीं आई अज्यूम दैट द पैटर्न ऑफ कैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम. दैट इज द रीजन आई एम एबल टू ड्रॉ दिस कंक्लूजन.
यू पीपल जस्ट अंडरस्टैंड, अगर मैं अज्यूम कर लूं कि वैसे भी इस साल कैट का पैटर्न चेंज होगा, तो कैन आई ड्रॉ दिस कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रमाइस ऑफ लास्ट ईयर? ऑफ कोर्स नॉट। तो यू पीपल अंडरस्टैंड, अगर लास्ट ईयर के बेसिस पर मैं कोई कंक्लूजन ड्रॉ करता हूँ, तो वहां पर एक अजम्पशन ये होगा कि इस साल भी कैट का पैटर्न वन एंड द सेम रहेगा, तो नो चेंज इज गोइंग टू हैपन दिस ईयर, तो दैट बिकम्स एन अजम्पशन। तो कई बार स्टूडेंट्स क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में you people will have to identify that assumption which is not openly given in the argument, openly given in the paragraph, but still you will have to deduce it. तो सारे स्टूडेंट्स एक चीज समझना, क्रिटिकल रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कुछ प्ले करता है तो दैट इज अजम्पशन। चलो मैं अजम्पशन को थोड़ा सा और समझाता हूँ। देखो, हम अजम्पशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो कई सारे स्टूडेंट्स के अपने अपने इंटरप्रिटेशंस होते हैं, कई सारे टीचर्स के अपने इंटरप्रिटेशंस होते हैं, बट व्हाट इज एन अजम्पशन? इसको यूं समझते हैं, अच्छा यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, कैन यू पीपल टेल मी व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट? व्हाट इज द अजम्पशन बिहाइंड इट? आप सोचो स्टूडेंट्स, अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हो तो आखिर आप कैट की तैयारी कर क्यों रहे हो? इसके पीछे स्टूडेंट्स आपका अजम्पशन क्या है? यस, एनीवन? आप क्यों तैयारी कर रहे हो कैट की? व्हाट इज द अजम्पशन? स्टूडेंट्स, द अजम्पशन इज शायद मैं निकल जाऊंगा, शायद मुझे एक अच्छा बी स्कूल मिल जाएगा, तो दैट इज द अजम्पशन, इजंट इट? तो हम उसी अजम्पशन से तो कैट की तैयारी कर रहे हैं, अंडरस्टैंड? क्या कोई स्टूडेंट इस अजम्पशन के साथ कैट की तैयारी कर सकता है कि शायद मैं फेल हो जाऊंगा, कि पास होने के चांसेस ही नहीं है? अगर स्टूडेंट्स आप पहले से अज्यूम कर लो कि यस एनीवे आई एम गोइंग टू फेल इन कैट, व्हाई विल आई पुट माय एफर्ट्स? दैट मींस व्हेन आई एम पुटिंग माय एफर्ट्स आई कैन इजीली अज्यूम दैट देयर आर सम चांसेस, okay, of clearing the exam. Now the chances can be less or more, but at least some probability is there. So unless I have that assumption, I will not put efforts for CAT. So students, what is an assumption? It is that positive expectation. It is that positive anticipation. अच्छा सोचो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ तो किस assumption के साथ कि यस ये कैट में आपको हेल्प करेगी, दैट इज द assumption. अगर मैं अज्यूम कर लूं कि वैसे भी क्रिटिकल रीजनिंग आपको बहुत ज़्यादा कैट में हेल्प करने वाली नहीं है, तो सोचो स्टूडेंट्स मैं क्यों पढ़ाता? दैट इज द पॉइंट. इसीलिए ऑल द स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड, अजम्पशन को बहुत अच्छी तरह से समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड स्टूडेंट, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये अज्यूम करता हूँ यस यू पीपल आर मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. दैट इज द रीजन आई एम टेकिंग दिस लाइव स्ट्रीमिंग. So you people do understand whatever we do, there is always an assumption behind it. बिना assumption के हम ना तो कुछ करते हैं और ना कुछ बोलते हैं, अंडरस्टैंड? हमने कुछ भी बोला है इसका मतलब है स्टूडेंट्स assumption is always there. चलो मैं कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं to make you understand what is the importance of assumption and how to identify this. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए कहा, स्टूडेंट्स if you want to crack CAT, you need to put efforts. You need to put efforts. You will have to work hard. अब सोचो स्टूडेंट्स, मेरे स्टेटमेंट के पीछे assumption क्या है? मैंने बच्चों को बोला अगर कैट क्रैक करना है तो खूब मेहनत करनी पड़ेगी. अब सोचो स्टूडेंट्स, इसके पीछे assumption क्या है? यस, क्यों मैंने ऐसा बोला? तो जो स्पीकर है, दैट मीन्स मैंने जो स्टेटमेंट बनाया, इसके पीछे मेरा क्या assumption होगा, अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट्स, पॉसिबल assumptions अब काउंट करना. पहला, ठीक है, व्हेन आई टेल द स्टूडेंट्स तुम्हें मेहनत करनी चाहिए फॉर कैट, आई अज्यूम दैट यू पीपल आर एक्चुअली नॉट पुटिंग एफर्ट्स. तभी तो मुझे बोलने की जरूरत है. सोचो स्टूडेंट्स, अगर मैं पहले से अज्यूम कर लूँ कि आप लोग वैसे भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, तो मुझे बताओ क्या मैं ये स्टेटमेंट बना सकता हूँ? जब तुम ऑलरेडी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो तो हाउ कैन आई से कि मेहनत करो? दैट मीन्स व्हेन आई से हार्ड वर्क, व्हेन आई से वर्क हार्ड, इसका मतलब है स्टूडेंट्स आई अज्यूम दैट यू पीपल आर नॉट वर्किंग हार्ड. पॉइंट समझ में आया? दिस इज व्हाट assumption is all about. Second assumption, when I say you people should work hard, if you really want to get a good score in CAT, I assume that you people really want to score high in CAT. तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मेहनत करो. सोचो अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि वैसे भी आप लोग CAT में बहुत अच्छा करना ही नहीं चाहते, तो मैं ये स्टेटमेंट क्यों बनाऊंगा स्टूडेंट्स? तो अगर मैं ये स्टेटमेंट बनाता हूँ, द पॉइंट इज वेरी क्लियर, मैं अज्यूम करता हूँ कि तुम लोग कैट में बहुत अच्छा करना चाहते हो, तभी तो कह रहा हूँ मेहनत करो. दैट इज द पॉइंट. एंड थर्ड assumption is you people will listen to my advice.
दैट बिकम्स द थर्ड assumption. वापस से स्टूडेंट्स काउंटर सोचो. चलो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि वैसे भी आप मेरी बात मानने वाले हो ही नहीं. तो मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हें कहूंगा कि मेहनत करो? जब मैं खुद अज्यूम कर रहा हूँ कि एनीवे यू आर नॉट गोइंग टू लिसन टू मी, व्हाई विल आई से दैट यू शुड वर्क हार्ड? So when I say you should work hard, that means I assume that you people will listen to me. Even if not each and every student, at least some students will be there who will listen to me. That is the reason students are making the statement. अब आप सोचो, मैं कितने भी स्टेटमेंट्स बनाता हूँ, हर एक के पीछे कोई ना कोई assumption जरूर होता है. और अगर कोई अच्छा स्टूडेंट assumption को कैच करना स्टार्ट कर दे, यस हाय कुशाग्र, तो स्ट्रैटेजी ऑफ बीआरसी की वीडियोस आपने बिल्कुल बिल्कुल कुशाग्र, आज से अपन ने स्टार्ट कर दिया है. देखिए अब वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगे. एटलीस्ट वीक में 2 या 3 लाइव स्ट्रीमिंग होगी और साथ में कुछ बहुत अच्छे टिप्स के वीडियोस भी यू पीपल विल कीप गेटिंग. बाकी टू बी वेरी ऑनेस्ट कुशाग्र, देखिए बहुत डिटेल से हम लोग पूरा डिस्कशन हमारे एप्लीकेशन पर करते हैं. तो वहां पर तो जो रजिस्टर्ड बच्चों हैं उनका देखिए पूरा डिस्कशन डेली बेसिस पर चल ही रहा है. बट एनीवे, इफ यू पीपल वांट टू स्टिक टू द यूट्यूब चैनल, नो इश्यूज एट ऑल. अ लॉट ऑफ कंटेंट आपको इस पर भी गाइडेंस वीडियोस और अच्छा खासा कंटेंट मिल भी जाएगा. तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको भी फॉलो करते हैं, फॉलो करते रहो. एंड नाउ कमिंग बैक टू अजम्पशन. क्रिटिकल रीजनिंग को सॉल्व करना हो तो सबसे पहले अजम्पशन को मास्टर करो. एंड स्टूडेंट्स, एक बार अजम्पशन समझ में आ गया, बिलीव मी, आरसी में आपकी एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव हो जाएगी. चलो एक और छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, इफ आई मेक अ स्टेटमेंट लाइक, स्टूडेंट्स कल सुबह भी मैं एक लाइव सेशन लूंगा. आप सोचो स्टूडेंट्स, अगर मैं ये स्टेटमेंट बनाता हूँ तो स्टेटमेंट के पीछे मेरे अजम्पशंस क्या होंगे? यस एनीवन? अगर मैं कहता हूँ कि कल सुबह भी मैं लाइव सेशन लूंगा, तो व्हाट assumption is there behind the statement? Yes, anyone? इसके पीछे assumption होगा, yes, एक assumption तो ये है कि yes, आप लोग चाहते हैं कि मेरे सेशंस हों, आप लोग लाइव सेशन ज्वाइन करोगे या पॉसिबली बाद में रिकॉर्डेड वर्जन देखोगे. yes, ये assumption तो है ही. बट अगर अपन थोड़ा सा और डेप्थ में जाएं, तो स्टूडेंट्स, when I say tomorrow again I'll take a live session, इसका मतलब है I assume that till tomorrow I will remain alive, isn't it? यार कल तक मैं जिंदा रहूंगा, ये assumption है, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि कल मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा. अंडरस्टैंड? सोचो स्टूडेंट्स, if I assume that anything is possible, how can I make the statement? So what I mean to say is, if I will come once again tomorrow to take a live session, I assume that I will remain alive till tomorrow. I also assume that you people will also be okay, and I also assume that कि कल तक nothing untoward is going to happen, no natural calamity is going to strike, everything is going to be okay as good as it is today. तभी तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट बन सकता है. कहने का मतलब है हर स्टेटमेंट के पीछे कोई ना कोई assumption होता है. इट इज ऑलवेज बेटर कि हम उस assumption को कैच करें. ओके, नाउ कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. स्ट्रेंथन, वीकन. कॉमनली स्टूडेंट्स आपने आरसी में ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे. Among the 4 options, which option, if true, strengthens the author's argument? Among the 4 options, which option, if false, weakens the author's argument? अब ऐसे क्वेश्चंस. और ये क्वेश्चंस आरसी में आते कहाँ से हैं? सीआर से ही तो आते हैं. आप देखो ना, जीमैट के जितने क्वेश्चंस हैं सीआर के, आई रिकमेंड ऑल द स्टूडेंट्स, आप तो जीमैट लेवल की सीआर को सॉल्व करो. आरसी में स्टूडेंट्स आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी. बिलीव मी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी. एक बार वो रीजनिंग समझ में आ गई, एक बार ये समझ में आ गया कि हाउ टू आइडेंटिफाई कौन सा ऑप्शन स्ट्रेंथन करता है, कौन सा ऑप्शन वीकन करता है, द जॉब विल बिकम इजी फॉर अस. देन स्टूडेंट्स, समटाइम्स द क्वेश्चंस लाइक वी नीड टू आइडेंटिफाई whatever is given in the paragraph. On the basis of that, which is a logical deduction, which is a logical conclusion, what inference can be drawn? So conclusion, inference, both are almost one and the same. कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, okay, you need to evaluate which question or test helps judge the argument. So whatever argument is given in the paragraph, among the 4 options, which particular question or the answer to which particular question can help us in identifying the strength of the argument? अब आप देखो, ये बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, और आप कैट के आरसी उठाकर देखो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं. एंड देन स्टूडेंट्स, पैराडॉक्स, resolve the situation, what explains the contradiction,
कई बार आप देखोगे क्रिटिकल रीजनिंग के पैराग्राफ में यू विल सी अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन एंड अमंग द 4 ऑप्शंस द क्वेश्चन इज व्हिच ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन्स द अपरेंट पैराडॉक्स। हमें उस पैराडॉक्स को समझना है एंड कौन सा ऑप्शन उस पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करता है, तो वी नीड टू फाइंड आउट दैट। Basically, students, these are the types of questions which actually come in CR, and now these are the types of questions which are coming in RC also. Anyway, students, मैं 3 questions आपके साथ आज solve करवाऊंगा, तो you will actually come to know what I mean to say. चलिए आगे बढ़ते हैं students. So CR trains you to identify arguments, assumptions, conclusions, and evidence. So this is going to help you in RC. Students, CR के questions अगर solve करोगे तो इन्फरेंस निकालने की आपकी जो स्किल है वो काफी इफेक्टिव हो जाएगी। If people are able to draw the conclusions and the inferences possibly and properly, that is going to become a big asset for you in RC. Third, accuracy in eliminating wrong options. सबसे बड़ी प्रॉब्लम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यही तो होती है स्टूडेंट्स। Almost everyone says that, sir, among the 4 options, we are anyway able to find out that these 2 are not the correct answers. But जो बचे हुए 2 options हैं, वहाँ पर correct answer को identify करना, we often commit a mistake there. And students, to understand why does it happen, you need to understand the paper setter's mentality, his psychology. Paper setter भी students जब options बनाता है, 2 options में तो वो खुद बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता. But जो बचे हुए 2 options हैं, उनमें से he will write one correct answer and he will write one more option which appears to be true but is not true. अब वो जो option है which appears to be true, which appears to be correct, that is something which is misleading. वो जो option है students, that is truly misleading. क्यों? वो हमेशा कोशिश करेगा कि that option should be very much appealing. कोई बच्चा जब पढ़ेगा तो उसको लगेगा हाँ यार, this option is very much appealing and this seems to be very much correct. But students, that particular option may have 10 reasons why it has to be chosen, with one minor reason why it should not be chosen. तो स्टूडेंट्स वो माइनर रीजन हम कई बार ओवरलुक कर देते हैं, इसीलिए हम कई बार गलतियां करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के बाद क्या करना है, हमें क्रिटिकल हो जाना है। Let us not accept the things. Let us try to reject the options. And the option which you are not able to reject, ultimately that is what you need to accept. So if you follow this method, आपकी एक्यूरेसी आप देखोगे बहुत जबरदस्त इंप्रूव हो जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के बाद क्वेश्चन ये नहीं होगा which option has to be chosen. क्वेश्चन ये होगा कि why this option should be rejected. And students, critical reasoning जब आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ना स्टार्ट करोगे, you will actually be able to understand the author's intention thoroughly. And once you understand what is the main intent of the author, what is the main purpose of writing the passage, I think students' accuracy improve हो जाती है. And then things to remember, हमेशा identify the argument structure. इसी को students में explain कर रहा था अभी just. तो किसी भी argument में there is a premise and there is a conclusion which is based on that premise. तो premise का मतलब है facts, reasons, experiences, any study, whatever. So you people do understand. So there is a premise and there will be a conclusion based on that premise. And then students, जो conclusion हमने draw किया है, definitely that is based on some assumption. So what is that assumption? You need to understand it. Okay. बस इसको अगर हमने catch कर लिया, the job becomes easier. Always read carefully, not quickly. And especially be very much careful about the various adverbs, conjunctions and pronouns. तो ये जितने qualifiers होते हैं, some, all, must, बड़े important. Extreme words हमेशा focus करो. Cause and effect हमेशा focus करो. Because, leads to, owing to, due to, etc. Rethink before looking at options. Absolutely be skeptical, not emotional. अब चीज़ों का हमें फटाफट एक्सेप्ट नहीं करना है. We will have to be skeptical. चलिए अब स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को डिस्कस करना. So this is one question which is there in front of you. I want all the students to pause it once. जो भी इसे बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार इसको पॉज करो. सबसे पहले खुद ट्राई करो and try to see which is the correct answer. And students, whenever you come across any question which is based on critical reasoning, I strongly recommend it is better to have a look over the question first and then read the paragraph. So this is definitely going to save your time. तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे
और उसके बाद स्टूडेंट्स अपन पैराग्राफ पढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, अब इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। नाउ सी स्टूडेंट्स व्हाट द क्वेश्चन सेज, which of the following options gives one more option as to why the crime rate decreased because of the terrorist attacks? Students, try to understand which of the following options gives one more option. इसका मतलब है one possible reason is anyway given in the paragraph and we are supposed to find out that one more option. So which of the following options gives one more option as to why the crime rate decreased because of the terrorist attacks? चलिए, अब स्टूडेंट्स अपन आते हैं पैराग्राफ पर। So terrorist attacks invariably lead to tremendous losses in life, property and morale of a country. The effects of a terrorist attack are not just immediate and can have long-lasting trickle-down effects as well. The fear, for example, takes a long time to die down. However, some of these repercussions can be beneficial to the country. Take, for instance, the recent terrorist attack on our capital city. In the weeks following the attack, the crime rate in the city came down significantly from what it was just before the attack. This must primarily be due to the increased presence of police resources that were moved to the area and is thus an indirect effect of the attack. तो पैराग्राफ कहता है स्टूडेंट्स, वैसे तो टेररिस्ट अटैक के बहुत सारे नुकसान हैं, देखिए, देयर आर मेनी डिसएडवांटेजेस, बट एट द सेम टाइम देयर कैन बी सम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एंड स्टूडेंट्स, वन एडवांटेजेस हमने ये नोटिस किया कि कहीं पर भी जब टेररिस्ट अटैक होता है तो वहाँ पर स्टूडेंट्स अटैक के बाद कुछ महीनों तक या कुछ दिनों तक क्राइम रेट बहुत कम हो जाती है। अब उसके पीछे पॉसिबल रीज़न क्या है? तो वन रीज़न विच इज़ गिवन इन द पैराग्राफ है पॉसिबली टेररिस्ट अटैक की वजह से वहाँ पर पुलिस का मूवमेंट बढ़ जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट जो रेगुलर क्राइम्स हैं वो कम हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, वन रीज़न इज एनीवे गिवन इन द पैराग्राफ, बट द क्वेश्चन इज वी नीड टू फाइंड आउट वन मोर रीज़न। अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, इन चारों में से व्हिच इज द करेक्ट आंसर? यस, आई जनरली सी, जब भी मैं इस क्वेश्चन को बच्चों के बीच में डिस्कस करता हूँ, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन होता है। एंड अमंग यू पीपल ऑल्सो, इफ एनीवन इज थिंकिंग दैट फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर, ओके, लेट मी टेल यू, फर्स्ट इज एक्चुअली नॉट द करेक्ट आंसर। व्हाई इज इट सो? आई विल टेल यू। देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? द कैपिटल सिटी इज अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लीडिंग टू क्विक डिटेक्शन ऑफ क्राइम्स मेनी टाइम्स व्हाइल द क्राइम इज स्टिल अंडर वे। स्टूडेंट्स, अब आप देखो, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हुए ठीक लगता है कि सर कैपिटल सिटी में क्राइम कम क्यों हुआ? बिकॉज इट इज अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लीडिंग टू क्विक डिटेक्शन ऑफ क्राइम्स। क्योंकि वहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ तो वहाँ पर मॉनिटरिंग बढ़ गई और इसकी वजह से जो क्राइम्स होने वाले थे, देखिए, क्विकली वो आइडेंटिफाई होने लग गए, उन्हें डिटेक्ट करना वॉज पॉसिबल एंड देयरफॉर द क्राइम रेट हैज कम डाउन। वैसे तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन सीम्स टू बी लॉजिकल, बट यू पीपल डू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑप्शन, इज इट गिविंग एनी अदर रीजन? नॉट एट ऑल। इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व, यहाँ पर स्टूडेंट जो रीजन मैंने दिया, क्या रीजन था? इंक्रीज्ड प्रेजेंस ऑफ पुलिस। एंड व्हाट इज द रीजन आई एम टॉकिंग हियर? आई एम टॉकिंग अबाउट इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। अब आप सोचो स्टूडेंट्स, अगर पुलिस की प्रेजेंस बढ़ेगी, इसका सीधा सा मतलब है वहाँ पर मॉनिटरिंग ज़्यादा होगी और मॉनिटरिंग ज़्यादा होने की वजह से क्राइम रेट कम हो जाएगा। तो अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट ऑप्शन एंड द रीजन विच इज गिवन इन द पैराग्राफ, दीज टू आर एटमोस्ट और दीज टू आर ऑलमोस्ट वन एंड द सेम। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन में हमने सिर्फ शब्दों को चेंज किया, बट द रीजन रिमेन्स टू बी वन एंड द सेम। इसलिए जिन बच्चों को लगता है कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। इट इज जस्ट टेलिंग द सेम थिंग इन अ डिफरेंट फ्लेवर। Okay, students, set us old wine in a new bottle. तो स्टूडेंट्स, हमसे क्या पूछा गया? वन मोर ऑप्शन। इसका मतलब है मुझे एक नया रीजन देना है, मुझे एक नया रीजन देना है। जबकि स्टूडेंट्स, आप देखो, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, ये तो उसी रीजन को नए शब्दों में दे रहा है। आई गेस यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, इंक्रीज्ड प्रेजेंस ऑफ पुलिस एंड इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, ये दोनों बातें
मोर और लेस वन एंड द सेम है, तो इसलिए वन इज नॉट द करेक्ट आंसर. सेकेंड, a number of people are frightened because of the terrorist attacks and have fled the capital city. If a number of people have fled, तो उससे क्राइम रेट कैसे कम हो जाएगी? डू यू मीन टू से दैट ये लोग जो भाग गए यही क्रिमिनल्स थे? आई थिंक स्टूडेंट्स दिस रीजनिंग इज लॉजिकल. एनीवे सेकंड ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट आंसर. थर्ड ऑप्शन, देयर वाज अ रिकॉर्डेड डिक्रीज इन क्राइम रेट अगेंस्ट there was a recorded decrease in crime rate right after the terrorist attack in almost all cities of the country. Students try to understand, चलो मान भी लेते हैं कि ऑलमोस्ट सभी सिटीज में क्राइम रेट कम हो गया आफ्टर द टेररिस्ट अटैक, बट द क्वेश्चन इज क्यों कम हुआ? दैट इज व्हाट द पॉइंट इज. तो थर्ड ऑप्शन तो स्टूडेंट्स वापस से वही कहता है कि हाँ कम हो गया, बट कम हुआ क्यों? दैट इज व्हाट द बेसिक पॉइंट इज. हमसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? कम हो गया, that is anyway given in the paragraph, but we are here to discuss what is the possible reason for that. So anyway, third option is not at all talking about any reason, इसलिए even third option will not be the correct answer. Now coming on the fourth one, Intel reports show that, Intel का मतलब है intelligence. Intelligence reports show that the terrorists who pulled off the attack had been committing various other smaller crimes regularly to distract law enforcement from their true purposes. Students, the correct answer to this question is fourth option. And why fourth option is the correct answer? Because ये जो terrorists थे जिन्होंने अटैक किया, just before the attacks, they were committing some smaller crimes, ताकि पुलिस का ध्यान उनकी तरफ चला जाए, उन क्राइम्स की तरफ. एंड जो मेन पर्पस है टेररिस्ट अटैक का, उसकी तरफ पुलिस का फोकस ही ना रहे. दैट इज व्हाट द पॉइंट इज. एक्चुअली स्टूडेंट्स, टेररिस्ट अटैक के बाद क्राइम रेट कम क्यों हुआ? द रीजन हैपेंस टू बी द सेम टेररिस्ट बिफोर द मेजर टेररिस्ट अटैक, दे वर कमिटिंग स्मॉलर क्राइम्स टू डिस्ट्रैक्ट द पुलिस, एंड दैट इज द रीजन टेररिस्ट अटैक के पहले क्राइम रेट्स वर हाई, और अटैक होने के बाद एनीवे टेररिस्ट का पर्पस पूरा हो गया, उन्होंने अब क्राइम करना बंद कर दिया. जो स्मॉलर क्राइम्स वो कर रहे थे, अब उन्हें करने की जरूरत ही नहीं है. दीज टेररिस्ट आफ्टर द मेजर अटैक दे फ्लेड, दे वेंट अवे, तो क्राइम रेट कम हो गया. तो ऐसा नहीं लगता स्टूडेंट्स कि फोर्थ ऑप्शन इज गिविंग अ वेरी गुड रीजन, एंड दिस बिकम्स अ न्यूअर रीजन व्हिच इज नॉट गिवन इन द पैराग्राफ. आई थिंक पॉइंट क्लियर है एवरीवन. एक अटेम्प्ट में और करता हूं टू एक्सप्लेन दिस. फोर्थ ऑप्शन कहता है स्टूडेंट्स, एक्चुअली हुआ क्या कि टेररिस्ट अटैक के पहले these terrorists, they were committing smaller crimes to distract the police. इसीलिए स्टूडेंट्स, टेररिस्ट अटैक के पहले क्राइम रेट हाई था, बट अटैक होने के बाद टेररिस्ट का पर्पस कंप्लीट हो गया, तो ये छोटे छोटे क्राइम्स जो वो पहले कर रहे थे, अब उन्होंने करना बंद कर दिया और टेररिस्ट अटैक करके वो चले गए. और इसीलिए स्टूडेंट्स, आफ्टर द टेररिस्ट अटैक्स द क्राइम रेट हैज come down. So fourth option gives a very, very logical reason, okay, why the crime rate has come down. Hence, fourth option becomes the correct answer. Now, you people see how beautiful this question is, isn't it? It's a wonderful question. ऐसे questions अगर अपन accurately answer देना start करते हैं, तो मुझे बताओ, reading comprehension में accuracy improve होगी कि नहीं होगी? 100%. Okay? चलिए, अब एक और question है. वैसे तो स्टूडेंट्स 2 questions और हैं, बट मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को सबसे पहले यू पीपल विल ट्राई एंड यू विल गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स. मैं चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे, एंड इन द कमिंग क्लास आई विल बी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन. आने वाली क्लास में स्टूडेंट्स मैं डिस्कस करूंगा और मैं बताऊंगा व्हिच इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. इट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन, और मैं नहीं चाहता कि मैं जल्दी से आपको आंसर दे दूं. तो मैं चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. ट्राई सॉल्विंग इट. कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना 2 का आंसर क्या होगा. एंड दिस बिकम्स क्वेश्चन नंबर 3. नाउ दिस क्वेश्चन इज अ सिंपल वन, नॉट सो टफ. तो इसका भी आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में. ओके, चलिए, तो 2 and 3 आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट्स हैं, एंड इन द कमिंग क्लास आई विल बी डिस्कसिंग द लॉजिक of these 2 questions. Okay, so finally students, now with this open house, if you people have got any question, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. क्या हमसे पढ़ना चाहते हैं, किस टॉपिक को मैं
अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में कवर करूं, तो यू पीपल कैन डू लेट अस नो. ओके, so thank you everyone for being with us. The critical reasoning is important for RC to understand. So if you really want to improve the accuracy for RC, solve hundreds of questions of critical reasoning. And अगले 6 months में it is very much possible. Okay, चलिए, so thank you so much. See you soon.